So hello everyone, welcoming you all. In today's video, we will try to draft a permanent suit for permanent injunction, which is the category in a civil suit. Apart from that, this is form number second. We have already done the form number first. That was also related with permanent injunction. So let's try to do. Let's learn how to draft a suit. I will also learn with you. You both will learn together, and this is only for our knowledge, not for mentioning in the suit. Permanent injunction, suit for permanent injunction, we don't have to mention this in suit. Okay, this is only for the awareness that we are doing this thing. Suit for permanent injunction. We have to start from here. Okay, see, in the court of senior civil judge, and you can alter the name of the judge according to yourself, according to the matter. You have to mention the name of the district here and the court. District, wait, district, what's wrong with me? District, you have to mention the district name. Okay, and the um, area where that court is located. Okay, okay, for example, the court is in Delhi. We don't have to mention Delhi here, it will come with this. Wait, we can do like this: Delhi, after the comma, and next line we can go with suit, as something like this. Okay, now in the matter of hmm, name of the plaintiff, for example, ABC here, son of, and ABC son of EFG. Okay, and there will be plaintiff. Okay, and here you have to mention the address. For example, address of the home is uh, Q2 Q2 134, and so on. Continue the address, and here will be the plaintiff. Is it clear? Now it is clear now. Now versus, if you have more than one plaintiff, then you can give the serial number like 1, then 2, and after that versus.
Okay, now it's the turn of fourth defendant. uh, Suppose we have two defendant. Defendant number 1, YGL, okay, XYZ, son of TUV, address HB727, and so on. Then to WQR, son of UIP, address 67B4, and so on. Defendant. Is it clear till yet? Till here? What I am not satisfied with is I want it like here. Hmm. Now it is fine, I guess. Isn't it? Looking good now? Hmm. Defendants done. Then we don't have to mention the title, but still for our knowledge, injunction, suit for permanent injunction. We don't have to basically mention this. Hmm. Most respectfully show with. Now point number 1, it should be in this manner, or it is fine in like this only. Okay, so that the plaintiff is the permanent residence, permanent resident of the above mentioned address in property bearing
number this then Pitampura, suppose the address is of Pitampura, New New Delhi, New Delhi, for the last many years, and is living with wife wife and minor minor children as a tenant. बेसिकली इट मीन्स कि रेजिडेंट जो है ये सॉरी प्लेंटिफ जो है, प्लेंटिफ दैट इज ABC, ये काफ़ी टाइम से जो है दिल्ली में इस एड्रेस पे रह रहे हैं अपनी वाइफ, अपने बच्चों के साथ एज अ किराएदार, एक किराएदार के तौर पे। दैट द plaintiff is a tenant in respect of the above said property bearing number Pitampura, New Delhi, consisting two rooms, toilet and kitchen in the above said premises of rent raise per month, excluding electricity and water charges under the tenancy of late Sri who died on this date यहाँ तक का मतलब मैं समझा देता हूँ कि प्लेंटिव जो है इस एड्रेस पे रह रहे हैं, और जो एड्रेस है, वो जो घर है, रेजिडेंस जो है, उसमें 2 कमरे हैं, एक टॉयलेट है, एक किचन है। इसका किराया जो है वो जो प्लेंटिफ है इतना अमाउंट दे रहे हैं। इसके अलावा वो बिजली बिल दे रहे हैं, पानी का जो बिल है वो दे रहे हैं, और ये रह रहे थे इनके कहने, मतलब इनसे बात हुई थी इनकी, जो कि एक्सपायर हो गए हैं ऑन डेटेड इतना, अंडर द टेनेंसी ऑफ लीड डैश हु डाइड ऑन, कि इनसे बातचीत हुई थी रहने की, और इनका नाम आएगा, और वो अब मर चुके हैं, और जो मरे वो जो उनको एक्सपायर जो हुए उनकी डेट यहाँ पर मेंशन होगी। एंड लेट श्री did not issue any rent receipt wait who died on this date
You can pause it and write it according to your adjustment. Apart from that, if you want the draft, this drafting in the form of PDF or Word, you can just ask me, and then I will upload it wherever you want now. जो एक्सपायर हुए जिनसे बात हुई थी, एंड लेट श्री used to collect रेंट, वो जो एक्सपायर हुए हैं वही पैसा लिया करते थे, collect the rent from the plaintiff, but late Sri did not issue any receipt to the plaintiff even after several demands made by the plaintiff, but he always used to postpone the issue of rent receipt. वही पैसे लिया करते थे जो एक्सपायर हुए हैं, उन्हीं से बात हुई थी रहने की. अपार्ट फ्रॉम दैट, वो जब रेंट लिया करते थे तो उनसे प्लेंटिफ ने डिमांड भी किया कि मैं आपको पे कर रहा हूँ, तो आप बदले में एक रिसीट तो दीजिए मुझे महीने का जो मैं आपको पे कर रहा हूँ. तो वो डिनाइल कंप्लीटली डिनाइल नहीं करते थे, लेकिन पोस्टपोन करते थे कि हाँ हाँ ठीक है, दे देंगे, बिल ही तो चाहिए, रसीद चाहिए ना, रसीद बाद में दे देंगे, ऐसा करते थे. दैट द प्लेंटिफ spent a huge amount on the construction of these 2 rooms in the above said premises at the request of late Sri and Sri dash assured that the plaintiff to adjust the said rent. The plaintiff is having the necessary documents proof of material for construction of rooms in the above said property. अब हुआ ये कि मकान वाले के कहने पे उन्होंने 2 कमरा उनके कन्विंसिंग पे दोनों में डिस्कशन हुआ जब, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें 2 रूम बनाना है तो बना लो ऊपर, और जो अमाउंट है वो
रेंट में एडजस्ट थोड़ा थोड़ा करके हो जाएगा, ठीक है। तो फिर प्लेंटिफ एग्री भी हो गया, उन्होंने 2 रूम भी बनवा लिया, और वो जो बनाने के प्रोसेस में जो खर्चा हुआ उसका रिसीट रिसीट भी है, कंस्ट्रक्शन में जो अमाउंट लगा उसका रिसीट भी है, उसका रसीद भी है प्लेंटिफ के पास। इट इज ऑल्सो pertinent. What was the meaning of pertinent? Wait, we also saw the meaning of pertinent yesterday, but I still forgot. Pertinent, uchit. Pertinent is uchit. Remember this. It is also uchit to mention. It is also uchit to mention here that the plaintiff looked after late Sri many a times whenever he fell ill. इसी के बावजूद भी प्लेंटिफ जो है उन्होंने कई बार जब भी बीमार पड़े हैं लैंड ऑनर, वो ये देखने गए हैं, उनकी देखभाल की है, ठीक है। कितनी बार उनकी देखभाल की जब भी वो बीमार पड़े। दैट एट प्रेजेंट द प्लेंटिफ is having the peaceful possession of premises नंबर, ये एड्रेस आ जाएगा पीतमपुरा, न्यू दिल्ली, and is having the whole necessary documents, records regarding possession. Photocopy of ration card, school card, school ID card is enclosed here with, इसी के साथ साथ जो है राशन कार्ड की फोटोकॉपी, स्कूल आईडी की फोटोकॉपी हम नीचे अटैच कर रहे हैं, लगा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ दैट एट प्रेजेंट द प्लेंटिफ इज हैविंग द पीसफुल, कि अभी जो प्लेंटिफ है वो जो घर में है अच्छे से प्लेंटिफ जो है वो पोजीशन में है, मतलब अभी उसी घर में रह रहे हैं, और उनके पास राशन कार्ड भी है, राशन कार्ड और स्कूल आईडी की कॉपी उन्होंने लगा दी है। दैट द plaintiff is having the whole necessary household goods which are lying or kept in the above said premises and having and is living peacefully. That the plaintiff is having the whole necessary household goods. plaintiff के पास जो है जो भी अनिवार्य सामान है
घर से घरेलू आने वाले सामान जो हर घर में होने चाहिए वो है और रखे हुए हैं उसी एड्रेस पे और अच्छे से रह रहे हैं, that the plaintiff has paid the agreed rent at the rate of rupees कितना, at the rate of rupees dash 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 कितना per month। प्लेंटिफ जो है उन्होंने, जैसा कि बात हुआ था महीने के इतना किराया देने का, वो दे दिया है टू लेट श्री अप टू इतने तारीख तक का दिया हुआ है। ठीक है, जैसा कि बात हुई थी। इट इज ऑल्सो pertinent to mention what was the meaning of pertinent, कुछ ये भी कहना उचित होगा, ये भी कहना यहाँ पर, ये भी यहाँ पर बताना उचित होगा that here that the legal hire of late Sri are not in the knowledge of the plaintiff, and at present also the plaintiff is ready to tender the rent before the legal hires of late Sri। इसमें कह रहे हैं कि पहले ही उन्होंने पैसे दे दिए हैं, रेंट का अमाउंट जो है वो लैंड ओनर को दे रहे थे, इसी के बावजूद अब लैंड ओनर अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो गए हैं, तो इनको अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी भी पे कर देंगे। इनको पता नहीं है, ये अवेयर नहीं है कि अब जो उनका उत्तराधिकारी जो है उस संपत्ति का वो कौन है। तो जो भी है हम राजी हैं पेमेंट करने के लिए, रेंट देने के लिए अभी भी हम राजी हैं, हमें पता चले कि इसका जो मालिक है, मालिकाना हक किसके पास है। That on date, you have to mention here the date the above said defendant came, इस तारीख को जो ऊपर मेंशन, जो हमने ऊपर मेंशन किया था डिपेंडेंट में, वो आए टू द above said premises of the plaintiff and threatened the plaintiff to vacate। वो घर पे आए, प्लेंटिफ के रेजिडेंस पे आए और आके उसको धमकाया, उनको धमकाया और ये बोला कि घर खाली कर दो। वेकेट द टेनांटेड premises immediately, otherwise the plaintiff would have to face dire consequences when the plaintiff asked about their
identity, then they did not disclose the same. क्या कि धमकी दी कि घर खाली कर दो, अगर नहीं खाली कर दोगे तो देख लेना जो होगा। इस प्रकार धमकाया। जब प्लेंटिफ ने पूछा कि आप तुम लोग हो कौन, आप कौन है, तब उन्होंने अपनी आइडेंटिटी जो है, अपनी पहचान भी नहीं बताई हमें। इंस्टेड started started throwing household goods forcibly and illegally, and started to quarrel with the plaintiff when the local residents or neighbors intervened in the matter. Then the defendant then the defendants left the spot. उसके बाद ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई और हमारे घर में घुस के हमारी चीज़ें जो है वो फेंकने लगे, साथ में हमसे झगड़ा भी करने लगे, प्लेंटिफ के साथ झगड़ा भी करने लगे। जब लोकल वहाँ पर आए, आसपास के पड़ोसियों ने जब हस्तक्षेप किया, बीच में आके बात की, तब जाके वो वहाँ से भागे हैं। स्पॉट आफ्टर threatening for dire consequences, means भयानक consequences, and to disposes the plaintiff forcibly and illegally in the near future with the help of local gundas. उसके बाद जाते जाते उन्होंने धमकी भी दी, फोर्सिबली की स्पेलिंग फोर्सिबली, जाते जाते उन्होंने धमकी भी दी कि अगर नहीं खाली किया ना तो अभी आके बताता हूँ, अपने लोगों के साथ आऊँगा, एंड समथिंग लाइक दिस, इस टाइप की जो धमकी है वो जाते जाते दी कि फ्यूचर में आके खाली करवाऊंगा अपने गुंडों के साथ। नॉट गुंडा मतलब अपने लोगों के साथ, बट इन द लैंग्वेज ऑफ प्लेंटिफ, गुंडास। The defendants openly stated that the staff of police post dances at their tune, and it is very
easy job for them to disposes any person or to grab the property of anyone with the help of the पुलिस स्टाफ। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी धमकी दी कि इस पोस्ट के पुलिस जो है ना वो मेरी बातों पे डांस करते हैं और मेरे लिए बहुत इजी है उनको बोल के ये घर खाली करवाना। तो इस टाइप की भी धमकी दी। साथ में आप धमकी अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा जो धमकी है। दैट immediately on the same date the plaintiff rushed to the पुलिस स्टेशन। उसी दिन जो प्लेंटिफ है पुलिस स्टेशन जाता है टू लॉज टू lodge his report against the defendants regarding such incident, but duly but duty officer did not lodge the report of the plaintiff. The plaintiff was surprised to see that both the defendants were already present at the at at the police station at the police station। ठीक है, इसका मीनिंग समझा दिया था। द इमीडिएटली ऑन द सेम डेट द प्लेंटिफ जो प्लेंटिफ जो है वो उसी दिन पुलिस कंप्लेन करने के लिए पुलिस स्टेशन पे जाता है। लेकिन पुलिस वाले जो है उसकी कंप्लेन उसकी जो उसका जो उसकी जो कंप्लेन है वो एफआईआर लॉन्च करवाने के लिए जाता है, बट एफआईआर लॉन्च नहीं करते हैं, रिपोर्ट नहीं लॉन्च करते हैं उस प्लेंटिफ का। इसी के अलावा प्लेंटिफ वहाँ पे देखता है कि डिफेंडेंट जो है वो पहले से उस पुलिस स्टेशन पे मौजूद है। that on date the plaintiff sent a notice to the defendant number 1 and copy to chowki in charge चौकी इंचार्ज on a copy of
Can we write something else in place of this, and Chowki and the copy of Chowki in charge, and the copy to, and the copy to the station station house officer, SHO, SHO of dash police station. This is more suitable, I guess. By registered address. आगे देखिए, copy of the same is enclosed here with, जो कॉपी है उसकी वो भी लगा दी गई है, वो भी अटैच कर दिया गया है, बट पुलिस स्टेशन पुलिस स्टेशन staff staff has not taken any action against the defendants for for reasons best known to them. लेकिन उन्होंने उसके बावजूद भी, अब जब हमने लिख के भी दे दिया, रजिस्टर एड्रेस से सेंड करवा दिया, कुरियर करवा दिया, बट स्टिल वो जो है कंप्लेन लॉज नहीं कर रहे हैं। डिफेंडेंट को हमने लेटर सेंड किया, नोटिस सेंड किया डिफेंडेंट को, उसके अलावा हमने उसकी एक कॉपी जो है उसी एरिया के पुलिस स्टेशन पे भी सबमिट की, बट उसके बावजूद भी उन्होंने सीरियसनेस नहीं दिखाई, और पता नहीं क्यों नहीं दिखाई, वो रीज़न जो है उन्हीं को पता होगा। that that on date on date the defendants along 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 with two unknown persons whom the plaintiff can can recognize by face came to the above above said premises came to the above said premises bearing number, जो एड्रेस है वो मेंशन करना है, कहाँ का था, पीतमपुरा न्यू दिल्ली।
उसके बाद एंड knocked at knocked at the door knocked at the door at odd hours and threatened the plaintiff to come out। उसके अलावा इस तारीख को, जो डेट मेंशन है, डिफेंडेंट जो है दो अन्य व्यक्तियों के साथ प्लेंटिफ के घर पे जाता है। उस दो वो जो अन्य व्यक्ति जो है उसको प्लेंटिफ पहचानता है चेहरे से, और इस एड्रेस पे आता है, प्लेंटिफ के एड्रेस पे आके, और दरवाजे को खटखटाने लगता है, खटखटाता है, वो भी ऐसे समय पे जिस समय पे नहीं खटखटाना चाहिए। उसके बाद प्लेंटिफ को जबरदस्ती धमका के बाहर आने के लिए कहता है, धमकाता है कि बाहर आने के लिए। उसके बाद थ्रेटन द प्लेंटिफ टू कम आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर आने के लिए, ऑफ द रूम, द plaintiff the plaintiff saw their faces from the from the gaps of the door, and the plaintiff got nervous and therefore did not come out of two-room apartment। जब आवाज सुनाई देती है तो प्लेंटिफ अंदर से ही गेट से झांक के देखता है और देखता है कि बाहर वही हैं। सॉ देयर फेस फ्रॉम द गैप ऑफ द डोर एंड द प्लेंटिफ नर्वस गॉट नर्वस। और उसके बाद वो थोड़ा घबरा जाता है, और इसलिए वो चूज करता है बाहर ना जाने की। बाहर ना जाना ही उसे उचित लगता है प्लेंटिफ को। द सेड द said person threatened the plaintiff to vacate vacate the premises immediately. However, then then the neighbors gathered there and they restrained the defendants from the defendants from disposing defendant restrain the defendant from dispossessing the plaintiff from the above said premises। प्लेंटिफ को जो डिफेंडेंट है धमकाता है, उसके बाद तब जाके आवाज़ सुन के जो नेबर्स है वो इकट्ठा होते हैं और फिर वो रोकते हैं डिफेंडेंट को प्लेंटिफ को घर से निकालने के लिए, ना निकालने के लिए।
disposing the plaintiff from the said forcibly disposing the plaintiff from the above said premises forcibly 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 and illegally when the neighbor when the neighbor threatened them, they left the spot with a threat to come after 1 or 2 days with heavy force to dispossess the plaintiff from the above said premises forcibly and illegally. उसके बाद जाते जाते तब जाके वो जब पड़ोसी आ जाते हैं तब जाके वो थोड़ा जाने लगता है और जाते 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 ये धमका के जाता है कि खाली कर दो वरना 1-2 दिन में फिर आऊँगा और ज़्यादा लोगों के साथ आऊँगा और ज़्यादा बल के साथ आऊँगा. नेक्स्ट पॉइंट दैट on date the plaintiff again ये चीज़ तो पहले भी उसके साथ हो रखी थी. उसने कंप्लेन भी किया तभी कुछ नहीं हुआ, फिर आके धमका के गया. अभी फिर इस इंसिडेंट के बाद प्लेंटिफ जो है फिर पुलिस स्टेशन जाता है. अगेन प्लेंटिफ अगेन वेंट टू द पुलिस पोस्ट or police station, whatever you like, to lodge the report against the defendant, but no police officer of the police station is ready to listen against the defendants, and they advised the plaintiff to approach to the competent court. पुलिस वाले ये फिर से जाता है, पुलिस वाले फिर से इसकी नहीं सुनते हैं और पुलिस वाले फिर इसको कहते हैं कि जाओ जहाँ की जुरिस्डिक्शन बन रही है उस कोर्ट में जाओ. of law to seek his remedy and to get injunction order against the defendants and the police post or police station, whatever you like, that the plaintiff has no other efficacious
How to pronounce it? Efficacious or efficacious? Efficacious. Efficacious. Yes. What would be its correct word? Efficacious. Another efficacious remedy except to approach to this honorable court for seeking relief of injunction against the defendants from interfering in the peaceful possession of the premises number Pitampura, New Delhi. That the plaintiff has no other efficacious remedy except to approach this honorable court for seeking relief of injunction against the defendant from interfering in the peaceful possession of the premises number dash पीतमपुरा. तो अब कोई उपाय नहीं बचा है, अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है प्लेंटिफ के पास सिवाय इस कोर्ट के सामने आने के और रेमेडी में इंजंक्शन मानने के कि कृपया करके उनको रोक दिया जाए कि हमें अननेसेसरीली हमको इंटरप्ट ना करें, हमको ना छेड़ें, हमको परेशान ना करें. That will be the remedy of injunction, that the cause of action arose on different date when the defendants when the defendants when the defendant threatened the plaintiff to vacate the premises. You know what is cause of action? Cause of action basically is a person's, wait, you don't have to write this, just for the knowledge, a person's legal right and breach of that right by another person. दिस इज कॉज ऑफ एक्शन. अब कब कब उसकी राइट जो है ब्रीच हुई है वो अलग अलग डेट को राइज हुआ है कि उसको अलग अलग डेट को धमकाने आया ना, तो वो सारी जो है कॉज ऑफ एक्शन हो जाएंगे. premises number this Pitampura, New Delhi, and threaten
the threaten the plaintiff number threaten the plaintiff of dire consequences, and further to dis disposes him from the above premises, bearing number this Pitampura, New Delhi, foresee forcibly and illegally. I'm typing since last 1 hour. Almost typed 4 pages. Includes 916 words, almost 1000 words. Uh, in within half an hour, we will just going to finish it up. Okay. And illegally, okay, the cause of action lastly arose on this date. In this para, basically we are mentioning that when the cause of action arose, उसने हमको धमकी दी, इस तारीख को उसने हमको धमकी दी, ये सारे cause of action arise करते हैं when the defendant again threatened and tried to disposes the plaintiff from the from the premises number Pitampura, New Delhi, forcibly and illegally with the connivance of the local पुलिस लास्ट बार उसने हमें इस तारीख को धमकाया, प्लेंटिफ को इस तारीख को धमकाया, और जिसमें पुलिस वालों ने भी उनका सहयोग दिया. द कॉज ऑफ एक्शन still subsists as the threat of the defendants to dispossesses the plaintiff and to create disturbance in the
peaceful peaceful possession peaceful possession of the premises number this Pitampura, New Delhi कंटिन्यूज। और ऐसा नहीं है कि ये जो खतरा है जो है कॉज ऑफ एक्शन है जो अब शांत हो गया है, अभी भी बना हुआ है क्योंकि डिफेंडेंट ने धमकी दी हुई है और हम चाहते हैं कि हमको धमकी ना दे और शांतिपूर्वक हम रह पाएँ, जो कि हमारा एड्रेस है। पोजीशन ऑफ द लास्ट सेकंड लाइन देखिए, पोजीशन ऑफ द प्रेमाइसेस नंबर डैश, ये एड्रेस आ जाएगा पीतमपुरा न्यू दिल्ली कंटिन्यूज, और हम आगे भी अच्छे से रह पाए। इसलिए कृपया करके एक इंजंक्शन का ऑर्डर इशू कर दीजिए। द वैल्यू ऑफ दिस सूट the value of this suit for the purpose purposes of court fee and jurisdiction is rupees dash। जो सूट की वैल्यूएशन है इतनी बन रही है, उस हिसाब से जो कोर्ट फी लगेगी, जो कि चार्ज लगता है, कोर्ट फी चार्ज करता है, वो इतना बन रहा है, तो वो हमने पे कर दिया है और जुरिडिक्शन भी इसी कोर्ट का बन रहा है। on which court fee of is dash is paid। तो इतना कोर्ट फी बन रहा था और हमने इतना पे कर दिया है, मीन्स टोटली पे कर दिया है। दिस ऑनरेबल कोर्ट has jurisdiction to entertain this suit because the part of the cause of action arose at Delhi and the suit property is situated। अब पीतमपुरा का कहाँ जाएगा, रोहिणी कोर्ट में जाना चाहिए एज फार एज आई नो। situated within the territorial jurisdiction of this honorable court। ठीक है, तो इस जो डिस्प्यूट को देखने की जो जुरिस्डिक्शन है इसी कोर्ट के पास है, तो हमने जुरिस्डिक्शन चेक कर लिया है और इसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, दिस ये पैराग्राफ मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, अब प्रेयर पे आ जाते हैं। बस वाइंड अप होने वाला है, आधा घंटा और आई गेस। प्रेयर को डाल देते हैं हम। कहाँ गया भाई, प्रेयर को हम साइड में डालना है। एक बार देख लो, पॉज कर करके, है ना। इफ यू वांट टू राइट इट यू कैन राइट इट। Now the prayer thing. It is therefore most respectfully prayed
that this honorable court may be pleased to pass the decree for permanent injunction in in favor in favor of the plaintiff and against the defendants, thereby restraining restraining the defendant their representatives, employees, agents, etc. Basically, these line meaning is कि एक डिग्री पास की जाए परमानेंट इंजंक्शन की, ताकि उनको रोका जाए, उनको ये ऑर्डर दिया जाए कि कृपया करके हमें परेशान ना करें। अब वही डिफेंडेंट क्यों ना हो गए, उनके रिप्रेजेंटेटिव कोई क्यों ना हो गए, उनके एम्प्लॉयज़ क्यों ना हो गए, उनके एजेंट्स क्यों ना हो गए, इनमें से कोई सा भी व्यक्ति, उनसे संबंधित कोई सा भी व्यक्ति है वो, और उनका उनसे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हमें परेशान ना करे। फ्रॉम dispossessing the plaintiff forcibly and illegally from the tenanted premises bearing number this, ओके, कि हमें घर से ना निकाले जिस घर में हम रह रहे हैं, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली, and also from interfering in the peaceful possession of the above said premises. Award cost of the suit in favor in favor in favor in favor of the plaintiff and against the defendant इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ की डिक्री जो है प्लेंटिफ के फेवर में और अगेंस्ट डिफेंडेंट में इशू किया जाए। पास सच ऑर्डर पास सच अदर एंड फर्दर ऑर्डर या फिर ऑर्डर्स एज में be deemed fit and proper on the facts and in the circumstances of this case। इसके अलावा कोई और डिक्री जो है जो कोर्ट को लगे कि हमारे फेवर में आना चाहिए, वो भी
ऐसा कोई ऑर्डर जो कोर्ट को लगता है उचित लगता है कि हमारे फेवर में आना चाहिए, वो भी कृपया करके इशू किया जाए। ठीक है। नाउ द डेट थिंग, डेट, प्लेस, प्लेस, okay, and then here plaintiff through add plaintiff through advocate। नाउ फाइन, यहाँ पे डेट और प्लेस आ जाएगा, डेट एंड प्लेस। कैन वी सेट इट इन प्लेस ऑफ हेयर, इसको कैंसिल करके यहाँ पर कैन वी डू समथिंग लाइक दिस, पेस्ट, but I want this at this place, it's not working, this should, this portion should be here, no, it's not looking suitable, let it be, I don't know what to do, let's make some जुगाड़, let's do some जुगाड़। इसको यहाँ से काट देते हैं, और सारा क्यों काट दिया मैंने, इसको पेस्ट किया यहाँ पर, इसको हम बैक लेके आएंगे, why, what's wrong with it, plaintiff through, I want this thing here, okay, and in next line I want place, this is the only expectations of mine, basic expectations, and now here I want advocate, advocate, this thing I wanted, okay. Now the last thing, verification, verification clause, verification thing, verified at Delhi on this day of April 2025 that the, you can mention anything here, I'm just leaving the blank, that the contents of
paras 1 1 to 1 to this 1 to this of the plaint are true are true to my knowledge derived 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 from the records of the myself maintained in the ordinary course of its business, those of paras to not this to this is the are are true on information received information received and believed to be true, and last para is the humble prayer to this honorable court. इसका मीनिंग मैं बता देता हूँ, पहले फाइनल क्लोजर इसका डाल दो। हो गया ये, यहाँ पे बस प्लेंटिफ मेंशन करके इसको यहाँ पर साइन के लिए डाल देंगे। इसको यहाँ डाल दे क्या, ठीक है, यहाँ पे ठीक है। अब देखिए इसका मतलब होता है वेरिफिकेशन, यहाँ पर ये मतलब है कि ऊपर जो हमने लिखा है उसमें पैरा 1 से लेके और यहाँ तक पैरा जो डैश छोड़ा है, ये तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है ये सारे पॉइंट जो हैं ये सारे सच हैं। उसके अलावा जो इस पैरा से लेके इस वाले पैरा से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है वो मेरे एडवोकेट ने मुझे समझाया है, और जितना मैं समझ पाया हूँ वो भी सारी चीज़ें जो हैं सही हैं, मेरी नॉलेज में जितनी है वो सही हैं। उसके बाद यहाँ पे साइन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सेट कर देते हैं, इसको बोल्ड से हटाना है एंड देन इसको सेट कर देना है। मार्जिन सेट ही है, मार्जिन थोड़ा बढ़ जाएगा एंड ये हमारा सुंदर सा प्लेंट बन के हो गया तैयार। इसको तो बोल्ड कर सकते हैं, बाकी सब स्मॉल चल जाएगा। इन द मैटर ऑफ, इसको भी बोल्ड कर देते हैं, ये भी बोल्ड हो गया। मार्जिन का थोड़ा सा, इसको मार्जिन जो है पैराग्राफ मार्जिन वो इसका कर देंगे थोड़ा सा 1.5 सुटेबल होगा। हाँ अब सही लग रहा है, नीट एंड क्लियर। ठीक है, अब इसको थोड़ा मिनिमाइज करके देखो कैसा लग रहा है ये हमारा सुंदर सा प्लेन प्रिपेयर हो गया। तो कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, हालांकि इसमें बस ये है कि ये वाला जो पोर्शन है ये नहीं लिखना है, बाकी ये वाली जो चीज़ है ये भी नहीं लिखनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट सारी चीज़ें आप कॉपी कर सकते हैं। फैक्ट जो चेंजेस होंगे फैक्ट अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। ठीक है, हो गया, बड़ा कर दें।
100 पे 100 पे करके एक बार चेक कर लेते हैं। दिस इज ओनली प्लेंट, है ना। इसके अलावा इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव इन इट्स ऑन वे, कंप्लीट नहीं है। इसमें मेमो ऑफ द पार्टीज आएगा, इंडेक्स वाला पेज आएगा, एनेक्चर्स आएंगे, वो सारी चीज़ें, कोर्ट फी की कॉपी, वो सारी चीज़ें। बाकी जो है ये एप्लीकेशन तो कंप्लीट है। ठीक है, डन। इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। हैव अ गुड टाइम, कीप प्रैक्टिसिंग। मेरे को भी करनी है, आप भी करेंगे साथ में और दोनों ही सीखेंगे। हैव अ गुड टाइम।